Hello, good morning everyone. Warm welcome to babycode free sessions. I am Thanu Vermani, a TOEFL and TESOL certified trainer and an IDP certified trainer too. So I'm back with my live session number 4. We are going to discuss about our live session number 4. We are covering our part 1 of reading, right? And today's topic is vocabulary question. So far we have covered 3 sessions of TOEFL. हमने 3 sessions already कर लिए हैं TOEFL के, in which I did this introduction to all the modules. Then part 1, factual and negative factual questions. Second was rhetorical purpose questions and inference questions. And today it's about vocabulary questions. So आप कैसे इसको attempt करने वाले हो? Let's talk about this in detail. Vocabulary questions क्या होता है? Now vocabulary questions means where you were asked, आपको पूछा जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कि क्या इस वर्ड का मीनिंग है या क्या इस फ्रेज का मीनिंग है, एज दे वर यूज्ड विद इन द रीडिंग पैसेज, क्योंकि पैसेज में वो यूज होते हैं ऑलरेडी, राइट? सो यू नीड टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना होता है मीनिंग ऑफ वर्ड्स को. इजी टू स्पॉट होते हैं बिकॉज वर्ड जो है, फ्रेज जो है, वो हाईलाइटेड होते हैं पैसेज में, ताकि आपको क्या शो हो जाए कि व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज हुआ है. एंड द क्वेश्चन इज यूजुअली रिटन इन द सेम वे, और क्वेश्चन भी सेम वे में लिखा होता है. वर्ड और फ्रेज इन द पैसेज इज क्लोजली इन मीनिंग टू. तो ऐसे आपको एक सेंटेंस मिलता है, एक फ्रेज मिलता है, यू हैव टू कीप इन माइंड. वर्ड और फ्रेज दैट इज सिलेक्टेड फॉर द क्वेश्चन, जो वर्ड और फ्रेज सिलेक्ट होता है क्वेश्चन के लिए, टिपिकली वो किस लिए नेसेसरी है? टू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक इन द पैसेज. वर्ड्स दैट आर चूजन वो एकेडमिक वोकैबुलरी से रिलेटेड होते हैं, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए, राइट? दे शुड नो दैट. स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी लाइक साइंटिफिक टर्म्स इसमें नहीं यूज होते हैं. When they appear in passage, they will often be defined within the passage in a footnote. अगर उसमें कोई scientific term होगा तो वो passage में already आपको define होगा, otherwise इसमें सिर्फ academic vocabulary आपको मिलेगी, right? So basically you need to find out the meaning, right? आपको क्या बताना है उस phrase का, उस word का meaning, right? Now what is basically vocabulary question, जो मैंने अभी आपको explain करा. ये vocabulary question they ask you to identify the meaning of words and phrases. आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या मीनिंग है इस वर्ड का और फ्रेज का जब ये यूज हो रहा है रीडिंग पैसेज में. सो ये आइडेंटिफाई करना है आपको वोकैबुलरी क्वेश्चंस को, बिकॉज वोकैबुलरी क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये जो वर्ड और फ्रेजेस होते हैं ये हाईलाइट होते हैं, और इसमें क्या लिखा होता है आपको स्टेटमेंट में मिलेगा, लाइक सी सी द स्टेटमेंट्स बिलो. Identify meaning of words and phrases. Word or phrase highlighted in the reading past. The word acts in the passage is closest in meaning to. तो वो वर्ड आपको मिलेगा और वो पैसेज में किससे मीनिंग उसका क्लोज है. द फ्रेज एक्स इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू. इन स्टेटिंग एक्स द ऑथर मीन्स दैट. तो क्या ऑथर मीन करता है, यू हैव टू फाइंड आउट. So the best way to do this type of question is कि आपको vocabulary words पता होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा. But if you really don't know the meaning, अगर आपको meaning नहीं पता, we can do this with 3 simple strategies, right? जिससे आप इस question को क्या कर सकते हो, tackle करते हो. Strategy number 1 is connect the words to the one you already know. अब इसमें आपको क्या करना है, आपको जिनका मीनिंग पता है उसके साथ आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे. ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट द अननोन वर्ड विद अ वर्ड इन द सेम सेंटेंस दैट यू नो. उसके साथ कनेक्ट करो जिसके साथ आपको पता है, राइट? वो सेम सेंटेंस के साथ. सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग थ्रू कॉन्टेक्स्ट. अब आपको पैसेज का कॉन्टेक्स्ट समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है ताकि आप क्या कैप्चर कर पाओ, मीनिंग कैप्चर कर पाओ किसका, हाईलाइटेड वर्ड का उस क्वेश्चन में. थर्ड वन इज चेक करो कि वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब, नाउन
क्या है, और एलिमिनेट करो इनकरेक्ट चॉइसेस को, राइट। तो अगर आपने थर्ड स्ट्रैटेजी चेक करी कि वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन है, एलिमिनेट करोगे इन इनकरेक्ट चॉइसेस को, बट कीप इन माइंड दैट दिस स्ट्रैटेजी इज ओनली टू हेल्प यू एलिमिनेट इनकरेक्ट चॉइस, है ना। आपको इनकरेक्ट चॉइस को एलिमिनेट करना है, करेक्ट को यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये करेक्ट वाला हो सकता है, राइट। सो वी विल डू दिस with an example also. Let's go through it. First question. So आपको यहाँ पे एक short passage दिख रहा है. Go through the passage and the word is here. The word prolonged in the passage is closest in meaning to. तो आपको किस word का meaning find out करना है? Prolonged का. Right? So see the excerpt from the passage. Passage में से देखो. Although it was well documented, the cause and progression of the disease were not understood until fairly recently. The discovery of the insulin and its role in diabetes was a prolonged process. अब वो बोल रहे हैं कि जो रोल है डायबिटीज का, इंसुलिन का जो रोल है डायबिटीज में, वो एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस है। तो हमें प्रोलॉन्ग का मीनिंग ढूंढना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। हमने 3 स्ट्रैटेजीज के थ्रू करना है। कनेक्ट द वर्ड यू ऑलरेडी नो, जिनके मीनिंग हमें पता है हम उनसे कनेक्ट करें, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू करें, या वर्ब एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उसके थ्रू हम एलिमिनेट करें, राइट। अब हम सारे वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट इज इनकम्प्लीट। क्या वो इनकम्प्लीट प्रोसेस हो सकता है? द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन एंड इट्स रोल इन डायबिटीज वाज अ इनकम्प्लीट प्रोसेस। नो। वाज अ डिलेड, डिले हो सकता है, केयरफुल प्रोसेस, या ग्रेजुअल प्रोसेस। सो प्रोलॉन्ग, जिनको मीनिंग पता है, राइट, द स्टूडेंट्स जो फेमिलियर हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है, लाइक प्रोलॉन्ग का, जिसको इजीली वोकैबुलरी के बारे में पता है, तो वो बहुत क्विकली ये बता सकता है कि इसका प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है। प्रोलॉन्ग मीन्स समथिंग विच इज गोइंग इन ग्रेजुअल स्टेज, है ना, जो आगे प्रोसीड हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोलॉन्ग बोलते हैं। प्रोलॉन्ग मीन्स रिलेटिवली लॉन्गर इन ड्यूरेशन, चलते जाने वाला, राइट। एंड ग्रेजुअल ऑल्सो मीन्स द सेम। सो ग्रेजुअल मीन्स अगेन प्रोसीडिंग इन वेरियस स्टेजेस, धीरे धीरे स्मॉल स्टेजेस में चलते जाने वाला, ग्रेजुअल होना, right? So the answer here is gradual, because it cannot be careful, it cannot be delayed, it cannot be incomplete, right? So see the answer here. And for explanation, you can see here. Now let's move towards to the second question. So here you need to find out, यहाँ पे आपको क्या find करना है? The word pose is closest in meaning to. अब आपको pose का meaning पता होना चाहिए. So read this excerpt from the passage. There is increasing evidence that impacts of meteoroids have had important effects on Earth, particularly in the field of biological evolution. Such impacts continue to pose a natural hazard to life on Earth. Such impacts continue to pose a natural hazard to life on Earth. So, what do you think? What is the meaning of pose here? First word says claim. Such impacts continue to claim a natural hazard to life on Earth. Model, model a natural hazard. Assume a natural hazard, or present a natural hazard to life on Earth. Because they are talking about increasing evidence. So उसके जो impact है वो क्या कर रहे हैं natural hazard पे? So they are continue to pose a. Pose means
present, right? They are continue to present a natural hazard to life on earth. Try to understand the context. पैसेज को रीड करके कॉन्टेक्स्ट समझो कि विच वर्ड इज सूटेबल है, कौन सा वर्ड यहाँ पे सूटेबल है, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द मीनिंग करेक्टली. Let's look at another question. The word remnants in the passage is closest in meaning to. अब आपको remnants का meaning पता होना चाहिए. So look at the example, go through the passage quickly. The assessment of past rises and falls in sea level requires study of submerged land surfaces of the coast, of elevated beaches on land. Raised beaches are remnants of former coastline. अब raised beaches क्या है? Remnants है former coastlines के at higher level relative to the present shoreline and visible. For instance, along the California coast north of San Francisco, the height of a raised beach above the present shoreline, however, does not generally give a straightforward indication of the height of a former sea level. So, reminiscent का क्या closest meaning है? Remains, regions. Try to eliminate also. देखो, remains हो सकता है, remains of former coastline, regions of former coastline, pins of former coastline, or origins of former coastline. So what do you think? Which one is the correct here? Take some time to read it, but try to complete it quickly because you will be having limited time. है ना, आपके पास limited time रहेगा. So remnants in the passage का क्या closest meaning है यहाँ पे? And look at the word former also, because remnant of former. Former means something belonging to पहले वाला, right? Previous time. Referring to something which is prior, है ना? Former. So remnants of former means remains of former, right? Remnants means former, leftover parts, पहले वाले के portions, उसके रह गए जो portions. So raised beaches क्या है? पहले वाले. That means remains के क्या है? Former parts, right? So remains is the correct answer here. Okay. Now see, the words that are tested, जो यहाँ टेस्ट होते हैं वो आपके academic vocabulary से related होते हैं. तो अगर if your English is at the level of university student, तो you should know, आपको पता होना चाहिए. They are not usually words कि आप उसे guess कर दो quickly, but yes, आपको एक vocabulary भी develop करनी चाहिए. Vocabulary वो भी academic vocabulary जो एक university student को पता होनी चाहिए. कीप इन माइंड की डिफरेंस होता है एकेडमिक वोकैबुलरी में और स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी में. बट एकेडमिक वोकैबुलरी यूज होती है मेनी फील्ड्स ऑफ स्टडी में. दीज आर द काइंड ऑफ वर्ड जिस पे क्या होता है, टेस्ट होता है आपका. स्पेशलाइज्ड वर्ड्स वो वन स्पेसिफिक टू वन फील्ड होते हैं, राइट? सो इफ वर्ड्स लाइक दिस आर इन टॉफल रीडिंग पैसेज, दे विल बी डिफाइंड फॉर यू. अगर वो होंगे टॉफल के पैसेज में तो वो जरूर डिफाइन होंगे, राइट? Academic vocabulary जो आपको पता होनी चाहिए, expected to know like this. Specialized vocabulary होती है defined for you, जो आपको example ये दिए हुए हैं और ये passage में explained होगी. तो अगर आपको increase करनी है अपनी vocabulary, one tip for you is कि आप English words को, बहुत सारे English words है जो Latin और Greek, तो अगर आप स्टडी करते हो लेटिन और ग्रीक रूट्स को, यू विल रिमेंबर द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. आप उनके मीनिंग को हमेशा याद करोगे, रखोगे, और इससे आप फिगर आउट भी कर पाओगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स यू मे नॉट नो, राइट? सो यू कैन सी अ चार्ट हियर, लेटिन एंड ग्रीक रूट्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स. अब रूट वर्ड है बायो, ओरिजिन है इसका ग्रीक, मीनिंग क्या है? लाइफ. तो बायोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ लाइफ.
कार्डी इज origin of ग्रीक origin है, मीनिंग है hurt. So cardiac is related to heart. Retro is Latin word. Origin Latin है, meaning means back. Retrospect means review past events. Vac is Latin word which means empty. Vacant means not occupied, right? So try to understand the root word और origin को समझो so that आपको examples और definition दोनों चीजें समझ आए, right? So if you know the Latin root terra, अगर आपको terra का meaning पता है कि it means earth, तो जब भी आप sentence में passage को देखोगे जो terrestrial material बताएगा, so impact क्या होगा? You will be referring कि ये material कहाँ से है? Earth से है, not from meteoroid, right? Terrestrial. Terra means earth. Even diluted by the terrestrial material excavated from the crater, this component of meteoroids is easily identified. So terra is earth. उसका origin क्या है? Latin origin है और meaning है earth. So try to understand this context, right? So I hope now you got an idea that how you are supposed to do this. So go and download our application, babycode app. Visit the babycode app and YouTube to watch our live sessions. Take your first step. We have already covered 3 sessions, so keep practicing. Practice karo, learn karo, so that you can watch your journey, right? And if you have any doubts, any comments, you can write in the comment section. Do the star rating. Let your friends also join these sessions so that they can also have a benefit, है ना? वो भी इसको पढ़ सकेगा. So don't miss out the sessions. Go back, watch session number 1, 2, and 3 because this is the 4th one, right? And I'm going to cover up soon the next topic of the TOEFL reading. Bye bye. Take care, all of you.